हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में हाइपरटेंशन का नर्सिंग केयर प्लान लर्न करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान एंड दिस इज़ यूजफुल फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज़ और फॉर द असाइनमेंट वर्क पर्पज़। आप यहाँ वीडियो में हाइपरटेंशन का जो हमने टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो से लर्न कीजिएगा। तो ये देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन हाइपरटेंशन। तो यहाँ नर्सिंग केयर प्लान से पहले हाइपरटेंशन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं यहाँ पर। व्हाट इज हाइपरटेंशन? या हाइपरटेंशन ऑल्सो कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। कंडीशन दैट अराइजेज व्हेन द ब्लड प्रेशर इज एबनॉर्मली हाई, मीन्स जब हमारे जो ब्लड प्रेशर है एबनॉर्मल हाई हो जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। ए डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन इज मेड व्हेन द ब्लड प्रेशर इज और एक्सीड 140 बाई 90 mm/Hg, मीन्स जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो हाइपरटेंशन का कंडीशन होगा 140 और 90 जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर है, तो ये कंडीशन हाइपरटेंशन में हम कंसिडर करते हैं। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान, जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है। फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान देखते हैं। इसमें सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, नर्सिंग इंटरवेंशन, रेशनल एवेल्यूशन। तो यह सारे स्टेप्स हमें जो यूज़ करने वाले हैं। जो नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप होते हैं, फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज द रिस्क डायग्नोसिस, मीन्स देर इज नो साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज बट देर इज पॉसिबिलिटी और चांसेस ऑफ सर्टेन कंडीशंस। तो यहाँ पर हमको सब्जेक्टिव डाटा में नॉट एप्लीकेबल लिखना है, मीन्स अभी तक बीमारी के कोई भी लक्षण प्रेजेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव डाटा assess blood pressure, assess quality of central and peripheral pulses, auscultate the heart tone and breath sound। तो हमको ऑब्जेक्टिव डाटा में जस्ट असेसमेंट करना है, मीन्स क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं। रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डिक आउटपुट मे बी रिलेटेड टू इंक्रीज वास्कुलर रेजिस्टेंस एंड वासोकंस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, दिस इज रिस्क डायग्नोसिस। एंड गोल देखते हैं। गोल है डिजायर्ड आउटकम टू रिड्यूस रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। यहाँ पर हमको डिक्रीज कार्डियक आउटपुट का जो रिस्क है उसको कम करना है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा नर्सिंग इंटरवेंशंस एंड रीजनल। तो यहाँ पर फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट इंटरवेंशन में देखते हैं मॉनिटर ब्लड प्रेशर। रीजनल मीन्स व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस इंटरवेंशंस। तो यहाँ पर रीजनल होगा प्रोवाइड बेसलाइन इन्फॉर्मेशन फॉर द इंटरवेंशन। ये हमने इम्प्लीमेंटेशन लिखा है। इम्प्लीमेंटेशन फेज इज द एक्टिंग फेज ऑफ दिस नर्सिंग केयर प्लान। तो आप यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन फेज भी लिख सकते हो, जिसमें आपको केवल नर्सिंग इंटरवेंशंस का जो एप्लीकेशन है वो करना है। मीन्स जैसे यहाँ लिखा है मॉनिटर ब्लड प्रेशर, इसको इम्प्लीमेंटेशन में लिखोगे मॉनिटर्ड, मीन्स हम ये प्रोसेस कर चुके हैं। तो ये आपको एक्टिंग फेज में लिखना है। नेक्स्ट सेकंड इंटरवेंशन प्रोवाइड काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट। तो इसका रीजन होगा इट हेल्प लेसन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस प्रमोट रिलैक्सेशन। नंबर थर्ड इंटरवेंशन मेंटेन एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शंस, बेड रेस्ट और चेयर रेस्ट एंड असिस्ट पेशेंट विद सेल्फ केयर एक्टिविटीज एज नीडेड। रीजनल होगा लेसन्स फिजिकल स्ट्रेस एंड टेंशन दैट अफेक्ट ब्लड प्रेशर एंड द कोर्स ऑफ हाइपरटेंशन। नंबर फोर्थ इंटरवेंशन देखते हैं प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स, बैक एंड नेक मसाज, द एलिवेशन ऑफ हेड। रीजनल होगा decreases discomfort and may reduce sympathetic stimulations। नेक्स्ट फिफ्थ इंटरवेंशन होगा इंस्ट्रक्ट इन रिलैक्सेशन टेक्निक्स, गाइडेड इमेजिनरी एंड डिस्ट्रैक्शंस। रीजन होगा कैन रिड्यूस स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई एंड प्रोवाइड ए calming effect, thereby reducing blood pressure। नंबर सिक्स्थ इंटरवेंशन मॉनिटर रेस्पॉन्स टू मेडिकेशंस। रीजन होगा टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर,
नंबर 7 इंटरवेंशन एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एज इंडिकेटेड। मेडिकेशन का नाम है जो हम हाइपरटेंशन कम करने के लिए यूज़ करेंगे। थायजाइड डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिन डायरेटिक्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसीए इनहिबिटर्स, वासोडाइलेटर्स एक्सेट्रा। रीजनल होगा एडमिनिस्टर मेडिकेशंस टू ट्रीट हाइपरटेंशन। नंबर 8 इंटरवेंशन होगा इम्प्लीमेंट डाइटरी सोडियम फैट एंड कोलेस्ट्रॉल रेस्ट्रिक्शंस एज इंडिकेटेड। रीजनल होगा these restrictions can help manage fluid retention and with the associated hypertensive response decrease myocardial workload. तो ये था interventions. After providing these interventions, we write here the evaluation steps. तो evaluation होगा now risk for decrease cardiac output reduce मीन्स जो हमारा गोल था उसको हमने अचीव किया है थ्रू दीज इंटरवेंशंस। गोल था टू रिड्यूस रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। सिंपली लिखना है मिस नाउ रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट केयर प्लान कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नर्सिंग केयर प्लान नंबर 2 फॉर हाइपरटेंशन। यहाँ पर सेकंड केयर प्लान में देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, नर्सिंग इंटरवेंशन, रेशनल एवेल्यूशन। सेम नर्सिंग प्रोसेस स्टेप हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं जैसे हमने नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट में किया था। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं। फर्स्ट ईयर सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट वर्बलाइज अबाउट पेन एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं। डिटरमाइन स्पेसिफाइज ऑफ पेन लोकेशन करेक्टरिस्टिक्स इंटेंसिटी 0 to 10 स्केल, onset and duration, assess the vital sign. नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस होगा acute pain related to increased cerebral vascular pressure. गोल और डिजायर्ड आउटकम देखते हैं। पेशेंट विल रिपोर्ट और रिलीफ ऑफ पेन और डिस्कम्फर्ट। नर्सिंग इंटरवेंशन एंड रेशनल देखते हैं। फर्स्ट इंटरवेंशन एडवाइज एंड मेंटेन बेड रेस्ट ड्यूरिंग द acute phase. रेशनल होगा मिनिमाइज स्टिमुलेशन एंड प्रमोट रिलैक्सेशन। नंबर सेकंड इंटरवेंशन होगा प्रोवाइड और रिकमेंड नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेजर्स टू रिलीव हेडेक सच एज कोल क्लॉथ टू forehead, back and neck rub, quiet dimly light room relaxation technique, guided imaginary distraction and diversional activities. यहाँ पर रेशनल होगा measures that reduce cerebral vascular pressure and slow or block sympathetic responses, effectively relieve headache and associated complications. नंबर थर्ड इंटरवेंशन होगा एलिमिनेट और मिनिमाइज स्ट्रेनिंग एट स्टूल, प्रोलॉन्ग्ड कफिंग, बेंडिंग ओवर। रेशनल होगा दीज एक्टिविटीज दैट इंक्रीजेज वासोकॉन्स्ट्रिक्शंस। नंबर फोर्थ इंटरवेंशन होगा असिस्ट पेशेंट विद एम्बुलेशन एज नीडेड। रेशनल होगा dizziness and blurred vision frequently are associated with vascular headache. The patient may also experience episodes of postural hypotension, causing weakness when ambulating. Number 5 interventions provide liquid soap stool and frequent mouth care if nose bleeds occur or nasal packing has been done to stop bleeding. Rishnoga promotes general comfort. Nasal packing may interfere with swallowing or require mouth breathing, leading to stagnation of oral secretions and drying of mucous membrane. Number 6 intervention होगा administer analgesics medication as prescribed. रेशनल होगा reduce or control pain. After providing these interventions, we write here the evaluation step of this care plan. The evaluation होगा now pain is relieved and patient feel comfort. तो ये था केयर प्लान नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड। This is the care plan number third. Here we using same steps: nursing assessment, diagnosis, goal intervention, rational evaluation, assessment में subjective data. Here
पेशेंट says about weakness and difficulty in doing activity. ऑब्जेक्टिव डाटा होगा यहाँ पर abnormal heart rate और BP response to activity. Electrocardiogram ECG changes reflecting ischemia, dysrhythmia, assess patient response to activity. Nursing diagnosis होगा decreased activity tolerance related to imbalance between oxygen supply and demand. Goal होगा patient will participate in necessary desired activities. Nursing interventions as additional देखते हैं. First intervention, instruct patient in energy saving techniques using a chair when showering, sitting to brush teeth or comb hair, carrying out activities at a slower pace. Here rational होगा energy saving techniques reduce energy expenditure, help in equalization of oxygen supply and demand. Number second intervention होगा encourage progressive activity and self care when tolerated. Rational होगा gradual activity progression prevent a sudden increase in cardiac workload. Number third होगा assist patient as needed. Rational होगा providing assistance only as needed, encourage independence in performing activities. Number fourth intervention, advise alternate period of rest and activity. Rational होगा conserve energy and increase activity tolerance. Number fifth intervention होगा provide proper nutritional diet as consult with dietitian. Rational होगा adequate diet pattern provides proper energy for doing activity. After providing these interventions, we write here the evaluation steps. Now यहाँ पर evaluation देखते हैं. Evaluation होगा यहाँ पर a patient doing activities as tolerated than before. जो हमारा गोल था पेशेंट विल पार्टिसिपेट इन नेसेसरी डिजायर एक्टिविटी वो अचीव हुआ है थ्रू दिस इंटरवेंशन जो हमने यहाँ प्रोवाइड किया है. तो ये था नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर फोर्थ. तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर केयर प्लान नंबर फोर्थ. इसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल एवेल्यूशन स्टेप्स. फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट वर्बलाइज इनएबिलिटी टू कोप और आस्क फॉर हेल्प. ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं. Destructive behavior towards self, overacting, lack of appetite, chronic fatigue, insomnia, muscular tension, frequent head and neck, chronic worry, irritability, anxiety, emotional tension, depression, assess individual stress, family, social work, environment, life changes, or healthcare management. Nursing diagnosis होगा ineffective coping related to situational crisis and inadequate coping methods. नेक्स्ट गोल और डिजायर्ड आउटकम देखते हैं. टू मेंटेन इफेक्टिव कोपिंग. नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल देखते हैं. फर्स्ट इंटरवेंशन असिस्ट द पेशेंट इन आइडेंटिफाई स्ट्रेसर्स एंड पॉसिबल प्लान फॉर कोपिंग विद दैम. रेशनल होगा रिकॉग्निशन ऑफ स्ट्रेसर्स इज द फर्स्ट स्टेप इन अल्टरिंग वंस रेस्पॉन्स टू द स्ट्रेसर्स. सेकेंड इंटरवेंशन encourage the patient include the care planning and maximum participation in the treatment plan. Rational involvement provides the patient with an ongoing sense of control, improves coping skills, and can enhance cooperation with the therapeutic regimens. Number third intervention देखते हैं. Encourage the patient to evaluate life priorities and goals. Rational focuses patient attention on the reality of present situation relative to patient's view of what is wanted. Number fourth interventions assist the patient in identifying when planning for necessary lifestyle changes, assist in adjustment rather than abandon personal family goals. Rational होगा necessary changes should be realistically prioritized so patient can avoid being overwhelmed and feeling powerless. Number 5 intervention देखते हैं. Allow the client to express feelings. Rational होगा feeling expressions reduces stress and anxiety. Number 6 intervention encourage for activity as per tolerance level. Rational होगा activity reduce stress and anxiety. Number 7 intervention motivate the client for post operative thoughts. Rational होगा to provide meeting
Psychological needs. Number 8 intervention encourage the client to doing yoga, meditation, therapy, etc. Yoga. These provide relaxation and reduce stress. After providing these interventions, we write here the evaluation steps. Now here evaluation होगा. Maintained effective coping. जो गोल था to maintain effective coping वो यहाँ पर अचीव हुआ है थ्रू दीज इंटरवेंशंस. तो नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 5. केयर प्लान नंबर 5 में हम भी सेम स्टेप्स यूज करने वाले हैं. नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रीजनल एवेल्यूशन. फर्स्ट सब्जेक्टिव डाटा देखते हैं यहाँ पर. Patient says that I want to know about the hypertension and its management. Objective to rare inappropriate or exaggerated behavior. Example: hostile, agitated, apathic, inaccurate follow through the instructions, inadequate performance or performance of procedures. Here diagnosis देखते हैं. Deficient knowledge may be related to lack of knowledge or recall. गोल होगा desired outcome. गोल और डिजायर्ड आउटकम देखते हैं. बट टू इम्प्रूव लेवल ऑफ नॉलेज, नर्सिंग इंटरवेंशंस, रीजनल देखते हैं. फर्स्ट एक्सप्लेन हाइपरटेंशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड ब्रेन. रीजनल का प्रोवाइड द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग. नंबर सेकंड इंटरवेंशंस assist patient in identifying modifiable risk factors, obesity, a diet high in sodium, saturated fat and cholesterol, sedentary lifestyle, smoking, alcohol intake, stressful lifestyle. These risk factors have been shown to contribute to hypertension and cardiovascular and renal disease. Number 3 interventions देखते हैं. Problem solve with the patient to identify ways appropriate lifestyle change can reduce modifiable risk factor. Changing comfortable or usual behavior pattern can be complicated and stressful. Support, guidance and empathy can enhance patient success in accomplishing these tasks. Fourth interventions देखते हैं. Discuss importance of eliminating smoking and assist the patient in formulating a plan to quit smoking. To quit smoking. Here होगा. Nicotine increases catecholamine discharge, resulting in increased heart rate, BP and vasoconstrictions. Number 5 interventions discuss treatment process here to provide knowledge about the hypertension treatment. Number 6 enforce importance of adhering to treatment regimen and keep follow-up appointments. Additional होगा. Lack of cooperation is a common reason for the failure of anti-hypertensive therapy. Number 7 interventions देखते हैं. Instruct and demonstrate the techniques of BP self monitoring. Additional होगा. Monitoring BP at home is reassuring to patient because it provides visual and positive reinforcement for follow-up the medical regimen and promote early deterioration changes. Early deteriorous changes. Number 8 interventions rise slowly from a lying to a standing position. Sitting for a few minutes before standing, sleep with head slightly elevated. Rational measures reduce the severity of the orthostatic hypotension associated with the use of vasodilators and diuretics. Number 9 interventions suggest frequent position changes, leg exercise while lying down. Rational decreases peripheral venous pooling that may be potentiated by vasodilators and prolonged sitting or standing. Number 10 interventions encourage the patient to establish an individual exercise program incorporating aerobic exercise, walking, swimming within the patient capabilities. Additional होगा. Bedside helping to lower BP. Aerobic activities aid in toning the cardiovascular system. Number 11 interventions take prescribed dose of antihypertensive regularly, avoid skipping, altering or making up doses, and do not discontinue without notifying the healthcare provider. Review potential side effect and or drug interactions.
Rational होगा because patients often cannot feel the differences the medications make in blood pressure. It is critical to understand the medications working and side effects. After providing these interventions, we write here the evaluation step of this nursing care plan. तो यहाँ पर फिफ्थ नर्सिंग केयर प्लान का जो इवेल्यूशन स्टेप होगा, नाउ इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ नॉलेज। गोल तुम्हारा टू इम्प्रूव लेवल ऑफ नॉलेज वो अचीव हुआ है थ्रू दिस इंटरवेंशंस। तो ये था नर्सिंग केयर प्लान नंबर फिफ्थ और लास्ट नर्सिंग केयर प्लान ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको नर्सिंग केयर प्लान का वीडियो कैसे लगा, इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा। एंड हमारे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।